स्वागत किया है मेरे यूट्यूब चैनल से और बात करेंगे आप लोगों से आज स्टॉक मार्केट क्रैश, व्हाई निफ्टी सेंसेक्स आर फॉलिंग। और आप लोगों ने देखा जो मार्केट हालांकि जो क्रैश हो रहा है, या सब लोगों ने देखा जो मार्केट का रेट चल रहा है, आप लोगों ने देखा। और मार्केट गिरा हुआ है, आप लोगों ने देखा। और स्टॉक मार्केट क्यों गिरा हुआ, इस बारे में आप लोगों से आज डिस्कस करेंगे। जो मार्केट का आज गिरा हुआ है ज़्यादा, और जो मार्केट का अनिल सिंह है वो बता दिया जो क्यों मार्केट गिरा हुआ है स्टॉक मार्केट का। और आप लोगों ने देखा सिंघाई नोटिस कर रहा है जो मेन रीजन फॉर द डिक्लाइन वाज द विनिंग दी ऑफ ट्रेडर पोजीशन, हेवी मार्क टू मार्केट और लॉसेस लीड टू मार्जिन कॉल, फोर्सिंग ट्रेडर टू रिड्यूस पोजीशन रिपीटेडली। और जो मार्केट गिरा हुआ है इसका कारण आप लोगों ने देखा जो वेडनेसडे द इंडियन इक्विटी मार्केट witnessed a sharp decline with the BSE Sensex falling 831.25 points or 81,349.22 डाउन हो रहा है 1.01% एंड निफ्टी आप लोगों ने देखा 50 स्लिपिंग 234.00 और पॉइंट्स कर रहा है 24,998.30 और डाउन हुआ है 0.93%। As of 1:11:1 IST on January 2026. और वाई मार्केट डाउन आज, इस बारे में आप लोगों ने अनिल सिंह भी बता दिया। और वाई स्टॉक मार्केट इज फॉलिंग, सिंह भी नोट दैट द मेन रीजन फॉर द डिक्लाइन वाज द अनविंडिंग ऑफ ट्रेडर पोजीशन, heavy market to market losses lead to the margin call, forcing the trader to reduce position repeatedly। और आप लोगों ने देखा तो witness the Indian equity market witness a sharp decline with the BSE Sensex falling 831.25 points or 81,349.22 down 1.01% and Nifty 50 slapping out to 134.20 points to 24,998.30 down और 0.93% डाउन हो रहा है। और आप लोगों ने देखा even during yesterday's fall our double selling number were minimal on a daily basis, the market can easily absorb such a level, Singhai explained. Singhai noticed that the main reason for the decline was the unwinding the trader position, heavy market to market or losses led to margin call.